डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? सर बिल्कुल ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है, जो जो तो होती है सेविंग, वो तो बेसिकली होती है नैरो माइंडेडनेस के साथ। उसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन कंसेप्ट होता है वो होता है बेसिकली एक हमें पैसिव इनकम जनरेट हो रही है बिना कोई, हम उसको कहते हैं सेविंग। उसमें क्या होता है, हमें एक प्री डिटर्मिन्ड रिटर्न मिलती है, हम उसमें जो कहते हैं उसको हम सेविंग कर देते हैं। लेकिन जब हमारे को एक चाहिए बेसिकली एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग नहीं होती सर। तो बेसिकली सेविंग में क्या है कि हमें पैसे जो है वो एक्टिव होती है, यहाँ पे हमारा रेट मिल रही है। मैंने बैंक एफडी में पैसा वक्त में इकोनॉमी में कुछ, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये हमारी पार्टिसिपेटिव होती है, ये एक्टिव होती है, इसमें हमें थोड़ा एफर्ट करने पड़ते हैं। तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है कि हम कोई भी ऐसी एसेट एक्वायर करते हैं जिससे आगे इनकम जनरेट। जी, तो अगर मैं सेविंग की बात करूं तो सेविंग ट्रेडिशनल है, इन्वेस्टमेंट जो है आज के न्यू टाइम की बात हो रही है। इसमें हमारा टाइम लिमिट जो है वो लंबा होता है, रिस्क एपेटाइट हाई होता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। सेविंग में पैसिव है। ये सब बातें जो हैं बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नो। सर आप क्लाइंट को मैं आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज की बात नहीं कर रहा। आपके क्लाइंट आपसे पूछेंगे, आप उनको गाइड तो कर सकते हो, गाइड करने के लिए। सर जब आपके पास एक क्लाइंट आता है तो आप तब उसको आप अपनी एक कंसल्टेंट फीस ले लो, टैक्स, ठीक है ना। अब ये कहते हैं 10,000 लूंगा, मैं 1% प्रॉफिट लूंगा, कैन नॉट डू दिस, ठीक है। लेकिन आप कंसोलिडेटेड आपकी टैक्स ऑडिट या इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न, बट आप वैसे क्लाइंट आपके ऊपर फेथ कर रहा है, यू कैन गाइड। तो जितनी भी हम बात कर रहे थे पहले, म्यूचुअल फंड हो गया जी, एफडी हो गई, आपका गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये सब आपके क्या है, मोड्स ऑफ सेविंग। सबसे 80 की सेविंग के लिए 1 अप्रैल मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आ जाते हैं जी, हमने तो 150 का कैश डिपॉजिट कर दिया। आज की डेट में जो पीपीएफ है वो आपको 7.4% की रिटर्न देता है। टिल 2019 वो देता था 8.1% की रिटर्न, ठीक है। बट हमारे क्लाइंट्स को क्या लगता था, लुक्रेटिव लगता था, क्योंकि इसमें बर्निंग होती थी। इंश्योरेंस और एनी ऑफ द बट मुझे पता है कि आज की डेट में इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल इंश्योरेंस आज तक किसी ने परस्यू नहीं की, हालांकि एक्ट है अभी भी बैंकिंग, और अभी आईबीबीआई में अभी इंडिविजुअल इंश्योरेंसी नहीं आई है। बट आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है किसी को, तो पीपीएफ का इतना हमें सिक्योर रहने की देयर इज नो नीड। तो क्यों हम अपने रिटर्न को 8.1 पे या 7.4 पे। दूसरा आ गया 1 जनवरी 2004 से क्या हुआ, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए कंपलसरी हो गया कि उनकी पेंशन पुरानी वाली रिमूव हो गई, उनको नई स्कीम में एंटर कर दिया, वो क्या था, नेशनल पेंशन स्कीम। उसमें आपने कंट्रीब्यूशन करना है, गवर्नमेंट भी, और उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको वहां से कॉर्पस मिलेगा। 60% कॉर्पस इज टैक्स फ्री और 40% कॉर्पस पे एट पेंशन है कि आपकी, वो आपको पेंशन मिलेगी, वो पेंशन टैक्सेबल नहीं। ऐड आ रही है पेपर में, तो सही है। हाँ, बट क्यों सही है, हमने वो देखना है कि व्हाई दे आर
सो बेसिकली अगर हम कंपेयर जो है वो इन्वेस्ट करता है सेविंग्स में टू सेव इनकम टैक्स। तो उसके पास ऑप्शंस है, पीपीएफ है, एनएससी है, बैंक एफडी है, ईएलएसएस है। सभी में 5 साल या उससे ऊपर का पीरियड है, 5 इयर्स टू 15 इयर्स का पीरियड है। ओनली ईएलएसएस स्कीम म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स है जिसमें 3 इयर्स का रिटर्न भी अराउंड 15% के 12 to 15% आती है, डबल डिजिट की बात करूं। ये 2019 की इसलिए मैंने फिगर लिया है क्योंकि 2020 में कोविड आ गया था। तो 2019 की बात करूं तो 8.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अब मुझे अगर मैं 15 इयर्स की मैं 1.5 लाख को अगर डिपॉजिट करता हूं तो मुझे 4.82 लाख का रिटर्न आ रही है एज फार एज योर पीपीएफ इज कंसर्न। बट विजाविज अगर मैं बात करूं ईएलएसएस की तो 11.93 लाख की रिटर्न आ रही है। तो यू सी द वेरिएशन इन द रिटर्न्स। सो क्यों म्यूचुअल फंड सही है? इट इज म्यूचुअल फंड बेसिकली कि कुछ हम सभी लोग आपस में मिलते हैं इकट्ठे कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस तरह की एसेट मैनेजमेंट कंपनी 39 के करीब है इंडिया में, जिसमें एक्सिस बैंक भी है, आईसीआईसीआई भी है, एचडीएफसी भी है, डीएसपी भी है। सो मेनी कंपनीज आर देयर, एसबीआई भी है। सो मेनी कंपनीज आर देयर। अपनी जो आपकी जो पैसा है उसको मैं विद हिज एक्सपर्टाइज वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। इक्विटी इज वेरी डीप इनटू इक्विटी। बट वो भी ये मानते हैं कि हमारा करिकुलम जो है सीए का उसमें अभी हमें इक्विटी का इतना नहीं बताया जाता जो कि आज की डेट में हमें रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली हमारा करिकुलम वो स्टोन एज वाला चल रहा है, जबकि हमें आज की डेट में हमें ये कैपिटल मार्केट की नॉलेज चाहिए। आज से पहले क्या होता था कि फंड्स की, इन्वेस्टमेंट्स की रिसर्च एनालिसिस वगैरह में सीएज होते थे। अब और हम लोग बेसिकली है बड़े नॉलेजेबल, बट हमारे को लैक ऑफ सपोर्ट इज देयर फ्रॉम इंस्टीट्यूट आल्सो, क्योंकि हमारा करिकुलम अभी जो है रिवाइज नहीं हुआ। तो उसमें क्या, अब सेबी ने क्या कर दिया, अब सेबी ने लिमिट लगा दी है एक्सपेंसेस के ऊपर। पहले क्या होता था, लॉट्स ऑफ कमीशन होती थी और एक्सपेंस के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती थी। अब 1 पॉइंट हर स्कीम में एक्चुअल जो रेशियो है वो 1.4 से लेके 1.7 तक होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। तो उसका कारण क्या है कि अगर आप इतना पैसा अगर आप खर्च कर रहे हो और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी, म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या है, वो होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं, जो जिसमें आपको होता है फिक्स पीरियड के लिए पैसा रखना होता है कि 3 साल तक आप निकाल नहीं सकते, उसको हम कहते हैं क्लोज। जिसको आप कभी भी निकाल सकते हो उसको हम कहते हैं ओपन एंडेड। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, ये डेट में कर रहे हो, इक्विटी में कर रहे हो। तो यू बीइंग सीएस आपको पता है कि इक्विटी में क्या है, how to make money in all these things. New area investors में how to make money. सबसे पहला प्रिंसिपल है इन्वेस्ट अर्ली। वॉरेन बुफे को माना जाता है, ठीक है जी, वर्ल्ड में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टर कोई है तो वो कौन है, वॉरेन बुफे। उनकी आज की डेट में जो $1 बिलियन, उनको किसने पूछा कि व्हाट इज योर बिगेस्ट रिग्रेट इन योर लाइफ, तो ही सेड आई 11 I was very late in investment. So basically क्या है, जितनी जल्दी you are going to start, as early you are going to start, it will be beneficial for you. आप ये देखिए कि यहाँ पे हमने 2 लोगों की बात की है, एक मिस्टर गुप्ता की बात की और मिस्टर सक्सेना की बात की है। तो उन्होंने 25 इयर्स की एज में शुरू किया, दूसरे ने 35 इयर्स की एज में शुरू से डिपॉजिट किया, दूसरे ने 20,000 से डिपॉजिट किया। बट जो 25 इयर्स से शुरू कर रहा था उसने 11.41 करोड़ बनाए, जबकि जिन्होंने शुरू किया 20,000 उन्होंने भी इन्वेस्ट 60 इयर्स की एज तक किया, बट उन्होंने 1.23 करोड़ बनाए, क्योंकि उनकी 20 इयर्स का डिफरेंस था। एक ने 25 की एज में, एक ने 45 की एज में शुरू किया,
एक का टाइम होराइजन था 15 इयर्स का, एक का टाइम होराइजन था 35 इयर्स। अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करते हो आपको हमेशा बढ़िया रहता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेते हो। हम लोग क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं बड़ी कर जाता है तो हम इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं। नो, कीप ऑन इन्वेस्टिंग विदाउट। अब देखिए जब हम ह्यूमन बीइंग है, अगर हमारा ईसीजी प्लेन आ जाता है, स्ट्रेट आ जाता है, तो वी आर नो मोर। तो सेम वे मार्केट जो है अगर प्लेन होगी, स्ट्रेट होगी, तो मार्केट में चाम ही नहीं होगा। तो हमेशा मार्केट जो है होती है जिगजैग वे में होती है। दैट इज व्हाई मार्केट जो है वो जिगजैग जाएगी। जब हम इन्वेस्ट रेगुलरली कर रहे हैं, हम हर पॉइंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें उसको हम कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हमने कोई भी मैंने डेट फिक्स कर ली, मैंने एक एक डिसिप्लिन चाहिए इन्वेस्टमेंट्स का। अगर मैं कर रहा हूं तो डेफिनेटली, अगर मेरी मार्केट डाउन थी, हो सकता है अगले महीने वो मार्केट अप हो, सो बेसिकली आई एम बाइंग एट एवरी स्टेप। तो उससे क्या है कि रुपी कॉस्ट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लोग कहते हैं गोल्ड इज वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। किसी ने गोल्ड 1995 में रुपीज पर ग्राम, ठीक है जी। इसी दौरान 1995 में एक इंडिया की टॉपर स्कीम है रिलायंस ग्रोथ फंड, जिसका अब नाम हो गया निपन इंडिया ग्रोथ। जब वो 1995 में लॉन्च हुई तो 10 रुपए का भी था, उसका लॉन्च हुई थी वो। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी थे। मिस्टर ए कहते नहीं, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद गोल्ड, तो मैं तो गोल्ड और 68 यूनिट्स बाय 24 ग्राम्स गोल्ड बाय किया, तो उसका टोटल बना 11,232। दूसरे सज्जन के पास भी 11,230 रुपीज थे, उन्होंने 11 रिलायंस ग्रोथ फंड की। आज की डेट में, आज अगर मैं बात करूं, आज हम हमारा गोल्ड प्राइस देखें तो 24 कैरेट गोल्ड जो है 4900 पर ग्राम है, 4900 पर ग्राम है। और मैंने 24 यूनिट बाय किए हैं, तो कितना बना, 1,18,000 के करीब। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप आ जाइए, जिसने रिलायंस ग्रोथ फंड की उसको 1123, एक 1123 यूनिट मिली थी। अगर हम उसका उस टाइम रेट था 10 रुपए, आज वो 1830 रुपए पर यूनिट है। उसका रेट 1830 है या 1828 के करीब है। तो वो बनता है 20,60,000। सेल करना पड़ जाता है, कोई सेल नहीं करता। और गोल्ड हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो डंप होकर रह जाती है, उसको यूज नहीं होता कहीं पे भी। लेकिन इक्विटी को आप टाइम टू टाइम यूज करते हो जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्वेस्ट जितनी रेगुलरली आप करोगे और कन्विक्शन के साथ करोगे हमेशा, तो वो आप डायरेक्टली करो इनडायरेक्टली करो, क्योंकि आप टाइम टू टाइम 9:15 से लेकर 3:30 तक टर्मिनल्स के ऊपर आंखें लगा के बैठो। बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म्स। सर हमें मुझे एक टारगेट रिटर्न सेट करना है, मेरा गोल था, मुझे गोल क्या है कि मुझे एक अच्छा घर बनाना है, मुझे रिटायरमेंट की, मुझे 60 इयर्स में रिटायर होना है, मुझे काम नहीं करना। जो कि आजकल यहाँ पे काफी पंजाब में ट्रेंड है कि बच्चों को, उस किट्टी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लंबा पीरियड देना पड़ेगा। तो अगर आप देखो, अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो 20 सालों में, पिछले 20 सालों का जो रिकॉर्ड मैंने दिया आपको, उसमें 6 बार ऐसा हुआ है कि आपका नेगेटिव गया है, जो अमाउंट है वो नेगेटिव गया है। लेकिन अगर आपने 3 साल की इन्वेस्ट किया है तो पिछले 18 सालों टाइम होराइजन बढ़ जाता है, 5 साल या उससे ऊपर हो जाता है, आपका जो रिटर्न है वो इफ योर टाइम होराइजन इज वेरी गुड। सो आपको पेशेंस रखनी ही पड़ती है।
अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इफ यू हैव सम गोल। अभी मैंने बात की इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल की हमने बात की है कि कुछ भी गोल हो सकता है। मैंने अब अमृतसर आना था, तो अमृतसर आने के लिए मेरे पास क्या था, मेरे पास ऑप्शन थे। मैं बाय बस आ सकता था, मैं बाय ट्रेन भी आ सकता था, मैं टैक्सी भी हायर कर सकता था, और मैं अपनी व्हीकल से आ सकता था। ट्रांसपोर्ट है। तो उसी तरह से मेरे पास मोड ऑफ सेविंग क्या है, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, बैंक एफडी भी है, गोल्ड भी है, प्रॉपर्टी भी है, म्यूचुअल फंड भी है। कि मेरा टारगेट रिटर्न क्या है, मेरा गोल क्या है, वो कब कितनी परसेंट रिटर्न पे अचीव होगा, और कौन सा पर्टिकुलर मोड ऑफ गोल को अचीव करने में मेरी हेल्प करेगा, तो मुझे प्लान करना है। तो अगर मेरे पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग का रोड मैप है, तो उससे क्या होगा, मेरी गोल्स की क्लैरिटी होगी। मैंने फिक्स कर लिया ना कि मुझे रिटायरमेंट के लिए चाहिए, बच्चों की स्टडी के लिए चाहिए, या किस काम के लिए चाहिए, तो मैंने गोल को अचीव, क्लैरिटी हो गई। क्लैरिटी के साथ मैंने क्या किया, उससे मुझे पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर मैंने कहा है कि मैंने 60 ईयर्स की एज में रिटायर होना है, और मेरी एज सपोज कर लो आज 35 है, तो मुझे 25 ईयर्स देने ही देने हैं बाई एनी मीन्स, मुझे पेशेंस रखनी पड़ेगी। और अगर मैं पेशेंस रख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पर्टिकुलर लेवल से राइज कर रही है, कंसंट्रेट अपॉन, तो मुझे उस केस में कहीं भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मुझे फाइनेंशियल गोल अपने रखने पड़ेंगे। जब करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि मुझे एफडी 6% दे रही है, 6.5% दे रही है, 5% दे रही है, बट हम ना कभी भी उसमें रियल रिटर्न नहीं निकालते। इन्फ्लेशन भी तो एक फैक्टर है। मैंने जब अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की, तो मैंने कहा इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट दोनों की बात करता हूँ। मेरा एफडी तो है जी, लेट इट बी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, पर अगर मैं 30%, और अगर 5% का इन्फ्लेशन है, तो मेरे तो नेगेटिव रिटर्न है, ठीक है ना। तो आप एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट है 5% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, और 6% की आपको रिटर्न आ रही है, तो बेसिकली आपको 3,38,000 का टोटल अमाउंट इंटरेस्ट मिला है। बट अगर इंटरेस्ट को देखो तो 2,76,000 तो आपको उसमें से इन्फ्लेशन है। अगर मैं कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे को सिर्फ 5 सालों में 60,000 का ही ग्रोथ हुई है। अगर मैं 30% स्लैब में हूँ, तो 40,000 मेरा माइनस हो रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं को मिला, तो 30% अगर उसमें है टैक्स, तो 1.8 निकल गया। वैसे तो 1.2% होता है विद सरचार्ज। मैं कैलकुलेशन चेक के लिए कह रहा हूँ कि 1.8 निकल गया, तो 4.2 रह गया। अगर 5% का इन्वेस्टमेंट भी हो, तो भी मेरी तो नेगेटिव रिटर्न है ना। बेसिकली हम कभी भी क्या करते हैं, जब भी हम रिटर्न की कैलकुलेशन करते हैं, हम कभी भी रियल रिटर्न नहीं लेते, हम इन्फ्लेशन को तो काउंट नहीं करते। वो भी काउंट करना काफी जरूरी होता है हमारे लिए। अब आप ये देखिए कि किसी ने अगर 1981 में लगाया था 1,000 रुपीज, और अगर उसको हम तो अगर इन्फ्लेटेड कॉस्ट लें, 8,888 होता है। और अगर उसने बैंक डिपॉजिट्स में लगाया है, तो 23,000 रफली उसको मिले हैं, जबकि इक्विटी में 2,21,000 के करीब मिल जाता है उसको। तो आप ये देखिए कि इक्विटी की कन्विक्शन देखिए कितनी बढ़िया है, लेकिन आपको पेशेंस और टाइम चाहिए सिर्फ। हम लोग गोल्ड बाय कर लेते हैं, कई बार उसका रेट डाउन हो जाता है, वो बिक नहीं रही होती, 6-6 महीने लग जाते हैं, 2-2 साल, 4-4 साल लग जाते हैं। हम प्रॉपर्टी को रख लेते हैं, लेकिन हम अपने म्यूचुअल फंड या शेयर्स को नहीं रखते, हम उसको फटाफट निकालने के लिए हैं। वहां पे हम अपनी पेशेंस खो देते हैं, जबकि हमें वहां पे बोलो एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन में क्या है कि डेट और इक्विटी की बात हम करते हैं, ठीक है जी। अब क्या है कि मैंने क्या किया, मेरे पास 100 रुपीज है, तो मैंने एक फिक्स कर लिया कि एज 100 में, चलो किसी पर्सन की 30 ईयर्स है, तो हम क्या करेंगे, 100 - 30, 70% को लगाएंगे इक्विटी। लगातार मार्केट, कोविड के टाइम से मार्केट बढ़ी रही है। अब मेरी जो मैंने 70% जो इक्विटी में रखा था, वो तो हो सकता है वो 140 हो गया हो, ठीक है। 70 रुपीज जो रखे थे मेरे, एसेट एलोकेशन करनी है दोबारा, मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है इक्विटी से। मुझे इक्विटी अपने टोटल पोर्टफोलियो जो है वो 100 का जो पोर्टफोलियो 190 हो गया। अब मुझे 190 का 70% इक्विटी डालना है, बाकी का मुझे डेट पे गेन नहीं चाहिए, मुझे रियल गेन।
एलोकेशन से क्या होता है, मेरा रिस्क एपेटाइट कवर हो जाता है और मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट जो है बेटर रिटर्न देती है। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, हम एक ही, मैं आप एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस टैक्स सेवर फंड बड़ा अच्छा चल रहा था, 2017 दिसंबर तक बड़ा बढ़िया चला, लोग उसमें पैसा लगा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद वो एकदम अनिल अंबानी जो अनिल अंबानी थे उनकी प्रॉब्लम आ गई, रिलायंस के फंड्स में प्रॉब्लम आ गई, बाद में उसको निप्पन ने बाय कर लिया, तो वो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड हो गया। अगर मैं उसको रिव्यू कर रहा होता, उसकी एलोकेशन कर रहा होता, तो मैं क्या करता, जैसे मेरे 3 इयर्स हो गए फंड में, लोग क्या कर रहे थे कि 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद ना उसमें ईएलएसएस में 3 इयर्स का लिमिट होती है, यू हैव टू होल्ड मिनिमम फॉर 3 इयर्स, तो लोग 3 इयर्स के बाद भी उसमें रख रहे थे। क्यों? क्योंकि रिटर्न्स बहुत बढ़िया थी। लेकिन अगर मैं उसको प्रॉपर्ली रिव्यू कर रहा होता, उसको मैं एसेट एलोकेशन को फॉलो कर रहा होता, तो शायद मैं टाइमली पैसा निकाल रहा होता, मेरा उतना बुरा हाल ना हो। एसेट एलोकेशन करना बड़ा कंपलसरी है, उसके बिना इज नथिंग टू गेन फ्रॉम द इक्विटी। डोंट टाइम द मार्केट। जब कोविड आया ना, आज ही मर गए, डूब गए, अब तो इकोनॉमी गई। बड़े लोग स्मार्ट इन्वेस्टर थे, उन्होंने क्या किया, उस स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने सबसे बढ़िया बात क्या की, उन्होंने सारा पैसा निकाल लिया। जब अब तो मार्केट गिरेगी पक्का, कोविड आ गया, बाद में लगाएंगे, वो बाद वाला टाइम नहीं आया तक। 25,000 से मार्केट वापस 53 पे चलेगी, लेकिन वो री इन्वेस्ट नहीं कर पाए, दोबारा मार्केट में नहीं आ पाए। सो बेसिकली क्या है, यू शुड बी रैशनल इन्वेस्टर, यू शुडंट बी स्मार्ट इन्वेस्टर। जहां भी आप, इवन वारन बुफे भी आज तक मार्केट को टाइम नहीं कर पाए। आप ये देखो, 82 इयर्स की एज में उनकी जो नेटवर्थ थी वो $58 बिलियन थी। 87 की एज में आके उनकी जो कैपिटल है, वो जो उनकी अपना वर्थ है, नेटवर्थ है, जो $85 बिलियन हुई है। तो ये क्या है, ये कंपाउंडिंग है, ये उनका पेशेंस है, टिके हुए हैं मार्केट में। और यही है कि ही इज अ रैशनल इन्वेस्टर, ही इज नॉट अ स्मार्ट इन्वेस्टर। तो आप कभी भी स्मार्ट मत बनो। तो जब भी सेंसेक्स की जर्नी देखिए, सेंसेक्स ने आपको मतलब आज तक की ओवरऑल देखिए तो +15% की आपको रिटर्न दी ही दी है। उसने निराश, डिसपॉइंट नहीं किया, निराश नहीं किया। मैनेज कैश फ्लो, सर 3 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं, उनकी इनकम बड़ी अच्छी होती है, 2 लाख रुपए महीना सैलरी आ रही है, लेकिन उन्होंने ना अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए, बाहर खाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो उससे क्या है कि उन्होंने अपनी इनकम तो अच्छी है, उनकी एसेट्स जीरो हैं। दूसरे हैं, उनकी इनकम भी अच्छी है और उनके पास एसेट भी अच्छी है, बट इनकम पुअर है। क्यों? जब इनकम जाती थी, अब उनके पास रहने खाने के लिए कम हो गया पैसा। पैसा अच्छा है, एसेट अच्छी बना ली, घर अच्छा बना लिया, बट उसकी, क्योंकि उसकी ईएमआई ज्यादा है, तो इसलिए क्या हुआ, तो उनकी इनकम पूरी होगी। तीसरे लोग होते हैं जिनकी एसेट भी अच्छी होती है और इनकम भी होते हैं बड़े, वो क्या करते हैं, वो अपने एक्सपेंडिचर, अपनी अपनी अदर थिंग्स को, इनकम को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, सेविंग्स को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, तो उनको हम कहते हैं एसेट रिच एंड इनकम रिच पर्संस। 3 बकेट प्रिंसिपल है। उसमें क्या है कि आपके पास 3 तरह के सेगमेंट्स होते हैं, इनकम को 3 सेगमेंट में बांटोगे। पहला है कि जो आपकी इनकम है 30 to 40% आप क्या करो, उसको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए रखो। अगर आपकी 100 रुपीज इनकम है, तो नॉट मोर देन 40% शुड गो इनटू योर एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट 30% से ऊपर आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। ईएमआई आपकी कभी भी आपकी 30% ऑफ इनकम से ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम आप देखते हो बैंक लोन की बात करते हैं, बना लो कि 30% ऑफ योर इनकम शुड बी इनटू ईएमआई, इन्वेस्टेड रेगुलरली इनटू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। जो पर्सन ये करेगा वो अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगा। और इन सब के ये 8 रूल्स के अलावा एक रूल सबसे बढ़िया, जो कि कोविड के टाइम में बड़ा आया, हमने देखा कि हमारे कुछ साथी, सीए साथी भी इस संसार से चले गए कोविड के कारण। लेकिन क्या थी, उनकी प्लानिंग नहीं थी, तो उनकी फैमिली को बड़ी प्रॉब्लम आई किसमें, लाइवलीहुड में। तो सीए बेनिफिट एप्लीकेशन लगी हुई हैं। अगर इन्होंने इस अमाउंट, ये सब करने के बाद एक और बड़ा काम किया होता कि टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय किया होता। छोटी एज, छोटे प्रीमियम में आप बड़ा टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय कर सकते हो। तो आपने अपने क्लाइंट को समझाना है कि सिर्फ
टिप एंड हिप इज कंपल्सरी। टिप इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप टर्म इंश्योरेंस प्लान टिप आप रखिए अपने पास, जो कि आपकी अगर सपोज कर लीजिए मिस्टर ए हैं, उन्होंने 1 CR 2 CR का प्लान लिया हुआ है, सपोज ही इज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ हिज फैमिली एंड एनीथिंग हैपेंस टू हिम, तो उनकी एब्सेंस में उनकी फैमिली सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो एटलीस्ट इंजॉय कर सकती है ना। अगर वो बैंक एफडी में भी लगाते हैं 1 CR 2 CR, तो अगर 6% की रिटर्न भी है तो 60 लाख तो आ गए उनके पास, 6 लाख तो आ गए, तो 50,000 पर मंथ तो आ गया ना उनके पास। तो एक अच्छा अमाउंट तो है जो जिससे वो अपना लाइवलीहुड को रन कर सकते हैं। सो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस प्लान इज कंपल्सरी। अदर थिंग इज हिप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। जब मैं चंडीगढ़ ब्रांच का चेयरमैन था ना, तो हमारे एक एग्जीक्यूटिव मेंबर थे विश्वास अग्रवाल जी, बड़े अच्छे सज्जन थे, उनकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी। तो उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो उन्होंने काफी उसका हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, 39 लाख के करीब उनका खर्च आया। और वेरी सरप्राइजिंगली ही वाज नॉट हैविंग सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। फैमिली अच्छी थी, पैसा खर्च हो गया, बट ही कुडंट बी सेव्ड। तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली वो पैसा जो है, जो बच सकता था, वो चला गया ड्रेन में, ट्रीटमेंट में। पर्सन भी नहीं रहे और पैसा भी चला गया। अगर उन्होंने वाइसली अपने आप को प्लान किया होता, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की होती, टर्म इंश्योरेंस प्लान की होती, और अपने सेविंग्स को मैनेज किया होता प्रॉपरली, आज उनकी फैमिली, उनकी वाइफ भी सीए हैं, उन्होंने राइट फ्रॉम द बिगनिंग बड़ी शुरू से उन्होंने शुरुआत की, फ्रॉम द स्क्रैचेस शी स्टार्टेड। जितने भी क्लाइंट से पैसा देना था, हमने इंटरव्यू करके कुछ क्लाइंट से पैसा लिया, बट लेकिन सभी क्लाइंट्स ने नहीं दिया ना, तो सब कह गए हम तो ऑलरेडी दे चुके थे। सो बेसिकली उनको स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। सो अगर उनकी टर्म इंश्योरेंस प्लान भी होता, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी होता और एसआईपी की होती उन्होंने, तो उनकी फैमिली कहीं बेटर होती। सो अगर आप इस तरह से अपने क्लाइंट्स को समझाएंगे, तो डेफिनेटली योर क्लाइंट्स आर गोइंग टू क्रिएट वेल्थ, और वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि आपने उनको सही गाइड किया है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चन आई एम रेडी। पीआईपीओ के लिए तो काफी जो आपको हेल्प करते हैं आजकल। तो उसके लिए कुछ करते हैं कि आप हमारे साथ आइए। जोमेटो में भी लगी थी और में भी। नहीं नहीं, अभी आईपीओ तो आया कहाँ, अभी आईपीओ से पहले। मैं वही कह रहा हूँ, जोमेटो का पहले प्री आईपीओ की ऑफर्स आ रही थी। आप बिंग सीए आपको आ रही थी, अगर वैसे भी आपको इन्वेस्टर्स को भी आ रही थी, तो वो आपको डिफरेंट कंपनीज ऑफर भेजती हैं जिनके पास पड़ा होता है ऑलरेडी। जैसे सपोज कर लो जोमेटो में नौकरी.com के पास पड़ा था, उन्होंने ऑफर कर दी कि हमसे बाय कर, तो वो आपको उस तरह से बाय कर सकते हैं। हाँ जी सर, वो डिपेंड करता है कि वो उसको डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट देखना पड़ता है। हो सकता है किसी में नहीं भी होती, जैसे अब जोमेटो का आया है तो हर जो घूम रही है, ठीक है। पेटीएम में अगर पेटीएम को इशू आ रहा है, वो अपने इशू अपने जो सर, जोमेटो इज अ न्यू इरा कंसेप्ट, यहाँ पे वैल्यूएशन के बेस पे चल रहा है। अगर आप देखो तो अगर हम जोमेटो की बढ़िया लीजिए, उनकी 41,000 की वैल्यूएशन है, लेकिन जोमेटो की 60,000 की है। सर वो वैल्यूएशन है स्टार्टअप के बेसिस, वो फ्यूचर कंसेप्ट है। इवन अगर आप यूएसए में देखिए ना, इंडिया में आप जोमेटो में क्या शायद हो सकता है शुरू में अन भी कर लीजिए, 90 पे खुल जाए शेयर, बट आई डोंट थिंक कि आप आगे कुछ ज्यादा होगा, बाकी पता नहीं। न्यू या क्योंकि सब रेट है, तो वो
सर हाँ जी sir, number one, SEBI has come out with another concept. Every fund manager has to invest 20% of his income into that very scheme which is managing. ठीक है, अभी फॉर द टाइमिंग वो होल्ड पे है. इज द नेक्स्ट टू इस सेक्टर में नहीं होता. म्यूचुअल फंड का अगर सेक्टोरियल बेसिकली क्या तो हम उस पर डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. सर आशीष जी के प्रोग्राम के बाद हम विल डिस्कस.
So fundamental technical analysis is there from last, I'll say 40, 50 years. And quantitative analysis is relatively a new term. It's there from last 20, 25 years. It involves a lot of stats, a lot of mathematics. So whatever we do on the basis of, I'll say, data science or algorithm, that is quantitative analysis. Okay. Like the same data science is used by Facebook also, the same data science is used by Google also. When Google tells us the map, Google shows us the map, or Google gives us the search engine. Whenever we search, whatever the Google shows as a search engine, that is also nothing but an algorithm. Okay. Google algorithm tells us this is the best page or this is the best site to visit whenever we are doing the search. We might have 1,000 friends in our Facebook, but Facebook shows only the relevant feeds to us. So that is the quantitative side, that is the data science. And the same data science is used in for investment purpose also. Just to give you an example, when Donald Trump was the president, he used to tweet. He used to tweet a lot. So there were a lot of algorithms which were reading his tweets and trying to make sense, what would be the reaction on the market. For crude or for RBI policy or Fed reports, usually these institutions publish 200, 300 pages report. Crude inventory comes every Wednesday, RBI policy comes every quarterly. So there is usually a 200, 300 pages report. It is humanly impossible to read that report within some fraction of time. But there are some algorithms built which do that in a quick second of time and try to make a decision that if Fed has said something, a dovish policy or a hawkish policy, what would be the impact on the stock market? So that is the quantitative analysis. I'll not discuss more onto the quantitative analysis because that's another topic for the day. That we can discuss another topic another day. So today's discussion would be totally into technical analysis. Quantitative analysis, okay, that I'll be probably, you'll be, by the end of the session, you'll be able to make it out. Okay. So when I say technical analysis, what is technical analysis? Okay, first, what is this? This is a Google map. Okay, it is a Google map from Pune to Bombay. I might have drove Pune to Bombay. I drive Pune to Bombay almost once in a month. कभी-कभी महीने में 4 बार भी हो जाता है. But every time I leave from home, whenever I have to drive to Bombay, I still check Google Map. Why? It's not because I don't know the road. It's very straight road, express highway hai, it's pretty straight. In fact, if you're in Bombay and if you ask any somebody who's staying in Bombay, even for his office road, if it's 7-8 kilometers distance, he'll still check Google. Why? Is that traffic time? Okay, but here it is written 2 hours 27 minutes. Will it going to take exact 2 hours 27 minutes? No, it's on the 60 km/h speed. It is based on some assumptions. It is based on some assumptions. It may take more than that. It may take less than that. But do we disqualify Google? We still see, because it tells you it's a map. It is an indicator. Okay. It is the same way technical analysis also works. The Google map is not 100% correct, but we still use it in our daily life. Okay. It depends where you have to go. If you have to travel 2 kilometers, you will not use Google Map. But if you have to travel distance, you'll always going to use Google Map. Okay. It's the same way you have to understand technical analysis also. Say if you have to invest 10% of your portfolio or your total wealth into equity market, you might not need to understand technical analysis. But you have to, if you have to invest a sizable portion, if you want to create fortune through stock market, then you need to understand technical analysis. So what is technical analysis? Technical analysis is the study of market data to analyze price, movement patterns, and activity of the activity in the market. So what we are studying in technical analysis is just the market data. What do we mean by market data? There are primarily 3 things we study in technical analysis. One is price, second is volume, and third is open interest. Okay. So basically, if it's non-F&O stocks, non-future and option stocks, so there's only 2 things. What we study in technical analysis, price and volume. What is the volume of that day? So the only thing that matters is the stock price as trading data, price and volume, and what information this data can provide us about the future movement of the security. So in technical analysis, we are not studying
industry, we are not studying balance sheet, we are not studying anything. It's just the price and the volume, and every analysis is done based on those two data points. Okay. So we have assumptions in technical analysis. Every science has certain assumptions. Okay. So what are the assumptions? The first assumption in technical analysis is market discounts everything. So what do you mean by market discounts everything? Market has all the information. So if a stock, X stock is moving at X price, so it is X price because market knows all the, that price may sab kuch incorporated in. If the new news is coming, so that is already incorporated in the price. That is the assumption in technical analysis. The what is more important than why. This is extremely important. A technical analyst will never get into why. Why indigo prices are moving. Plane band hai, price super uske ud rahe. Why? No technical analyst will try to answer a question like that. Why HDFC is not moving, or why ITC is not moving. Why is never important. If ITC is not moving, what it has to be done? So it is always always a reactive science. You get the data, you analyze, and you react to it. You react like, if this is the situation, what we have to do, rather than we try to find out the why. A technical analyst will never try to find out the why this stock is going up, why this stock is not going up. That is never the question. If this stock is going up, what do you have to do? If this stock is not going up, or if this stock is going down, what do you have to do? So that is the most important aspect of technical analysis. Price moves in trends and sideways. So price always moves in a trend and sideways. History tends to repeat itself. So history always tends to repeat itself in the markets. I have a question. Like what you have said, the price of the movement and the volume. For example, if we talk about the Rani Enterprises, it has movement from the last year from 164 to it means 1700. Now, according to the fundamental principle, the stock was overvalued. And now, due to that, for the technical analysis, the stock is in the downward trend due to the committee, which is the according to technical analysis, price is in the downtrend because it is going in the downtrend. They'll not be concerned what is happening on the. Yeah. 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 So I just want to have one question. Is technical analysis good enough to evaluate the quality? I'll come back to that. By the end of the session, I hope I'll be able to answer that. Okay. So is how to use technical analysis. I'm sure by the end of this discussion, that question will be answered automatically. Okay. So this is a line chart. This is something a very commonly used chart pattern. We have studied this everywhere. We see this chart pattern. So this is nothing new. In technical analysis, we don't use this pattern. We use a candlestick pattern. What is a candlestick pattern? In a line chart pattern, this is a Biocon stock price chart. So it's just calculating the closing price of that particular day. Okay. So this is a very common form of a chart pattern, what we have studied in school also. So in candlestick, instead of using just the close price, we focus on 4 price. So that is open, high, low, and close. So किसी भी period का, say if I'm using a daily period chart, so I'll be seeing उसके आज का open price, so that is 915 वाला price, whatever the high it has made during that day, whatever the low it has made during the day, and whatever was the closing price at 3:30. So a usual candle would be, we say the up candle when my open is low and the close is high. So this is a typical up candle. Why it is up candle? Because the close is higher than the open, and it's a down candle when close is lower than the open. So this is till what we use in a basic framework. Now the question is, again coming back, is technical analysis a holy grail? Now if you'll see all the channels, agar 8 जनों का panel hai, you'll find at least 5 technical analysts. Every channel, be it a CNBC, be it anything. You read Economics Times, you'll find there's a column where some technical analyst suggesting some stock price,
So why is technical analysis considered so good among the financial domain people and outside the financial domain? I'll say outside the stock market people, why people are not so keenly aware about it. Okay. So I tried, whenever we have to make a presentation, we always try to do one thing. किसी भी को भी अपने को presentation बनाना है तो हम सबसे पहले एक काम जरूर करते हैं. We try to Google that topic, isn't it? Everyone, whosoever have to make a presentation, we try to Google that topic. And even I try to do that. So I try to Google similarities between economics and technical analysis. I try to Google economics and technical analysis में क्या similarity है. And to my surprise, I couldn't find anything on Google. At least on the first 3 pages I checked, I couldn't find anything on the Google on this matter. So whatever we'll be discussing today will be a little unique perspective. Why it is unique? Because it's not there on the Google. That anything which is not there on the Google today makes it becomes automatically unique. Okay. So when I tried to search this, I got something like fundamental analysis and difference between fundamental and technical analysis and those sort of things. So nothing very specific to economics and technical analysis ke similarities kya hai. Okay. So we'll just jump to similarities between economics and technical analysis. We all, as a chartered accountant, we all have studied economics. We all, I can say, are master of economics. If most of you are in practice, so you deal with clients, you deal with economics, you deal with broader economy perspective. Most of you have your own businesses, so you're well versed with the economics and economics basic stuffs. So whenever we say economics, it starts with assumptions and exceptions. Every economic theory have assumptions and exceptions. Am I right? That is the basic of economics. That every economic theory will have assumptions and exceptions. No economic theory is absolute, I'll say. So there's always been assumption. What is the assumption? When I say economic theory, there's an economic theory that incomes, people, wealth increases, their expenditure increases, or their luxurious good expenditure increases. But that's an assumption. What is the exception? Azim Premji is an exception. Elon Musk is an exception. Warren Buffett is an exception. So it is not always the case. So similarly, in technical analysis also, yeah, very few, but there are exceptions. Yeah, that's what I'm saying. There are few exceptions. No, I mean, we are not saying that there are massive exceptions. What we are saying is there might be 10% of the people who will be the exception. So whenever we say economics, so there will be at least 90% of the data will be part of that sample or that population, and there will be 10% which will be saying as outliers. Okay. So in technical analysis also, it is not a pure science. There's always, whenever we see a chart, there's always going to be an assumption and there's always going to be an exception. What is the exception? The assumption was that price will going to go up, but there can be exception that price is going down. So that is an exception. Okay. When these assumption and exceptions do not these hold goods in economics. So similarly, these assumptions and exceptions, whenever we say कि अभी किसी technical analyst ने बोला कि price ऊपर जाएगा और वो price नीचे आ जाता है, then we say नहीं ये तो charts चलते नहीं है. But we don't say that word to economic theory. When Warren Buffett doesn't buy a new car, we don't say no, this theory is wrong. Okay. So even technical analysis always have an assumptions and the exceptions. So the second point is economics is considered as a science and arts. Okay. Similarly, your technical analysis is also a combination of science and arts. When I'm saying science, when we are doing a moving average, it is pure science. There's nothing gimmick about it. There's nothing mystical about it. It is pure science. It is pure maths. And what is the art part? When I'm trying to study a pattern, when I'm trying to understand a pattern in the price, so that is the arts. Okay. So economics, maybe we always study, economics is also known as a science and arts. Technical analysis also is a combination of science and arts. Theory and hypothesis. So everything in economics is a theory and it's a hypothesis, and we test that hypothesis.
through the data. Okay. So in technical analysis also, it's a theory and a hypothesis. The technical analyst have a theory and he makes a hypothesis that because of this pattern, the price will either go up or either will go down. Rules and principles. So in economics also we have rules, okay, and the principles on the broader frame. So in technical analysis also we have rules and exceptions. What is the rules? Say if price is making higher highs and a higher low, what is higher highs and what is higher low I'll describe in the later slides. जब भी price ऊपर जा रहा होता है, तो when we say it's in an uptrend. So that is a rule in sort of technical analysis. Economics may be in every economics we have rules and principles. Probability. This is very important. Economics is, हम economics में कभी नहीं बोलते कि ये 100% ऐसा होगा. Inflation बढ़ेगा, तो there's a probability that this, if petrol prices rise, there's a probability that inflation will rise. It is never said कि it is होगा ही. It's always a futuristic prediction with some probability. So a technical analyst also is, whatever statement he is making, it's always a probabilistic statement that there's a 90% probability the price will go up. There is a still 10% probability that price may not go up. Okay. Study of past data. How an economist make his hypothesis, theory, or what are the assumptions he's making? He always study the past data. Economist might study 100 years of past data. What is the RBI has done? What is the Fed has done? How's the X government has done? How Venezuela, Zimbabwe government has done. So that is always a study of past data. In technical analysis also, what we are doing is we are studying the past data. We are studying the past charts, past data on the charts. Based on the past data, an economist try to predict the future. Okay, say 1929 में depression आया था, so this has happened. 2000 में there was dot-com bubble, so this has happened. During 2008 the banks failed, collapsed, financial institution collapsed, so this has happened. So economists try to study the past data and predict the future. So that is what the technical analyst is also doing. So जो charts देख रहा है technical analyst, वो भी वही कर रहा है. He's studying the past data and he's trying to predict the future. Use of statistics. Statistics is a key component or a key part of economics. Similarly, here also statistics is highly used. One of the statistical indicator is stochastics. Stochastics is used even for weather prediction. It's a model which uses random variables. जो weather का भी data है, उसमें भी stochastics use हुआ होता है. Google के algorithms में भी होता है, economics में भी होता है, and technical analysis में भी होता है. Practice. So what does mean by practice? A good economist at least study 3 years of degree, 2 years of masters, and at least 5-6 years he's working somewhere as an economist before he even say that I'm an economist actually. So there's at least 7-8 years of practice. And technical analysis में क्या करते लोग? They try to do some Google search, couple of YouTube videos, एक हफ्ते का class, and they say we are now technical analysis. पापा मेरे को एक 5 लाख का check दो. I want to invest in market. To become an economist, you study 8 years, and technical analysis you think 7 days is enough. 7 days is enough to understand, but not enough to put your hard-earned money. It's a science. It's like a science and arts. Science and arts में हमेशा बोलते practice makes a man perfect. मतलब the more sums we solve or the more painting we draw, the more better we become in that craft. So technical analysis may be you have to practice. You have to practice a lot. At least I'll say before you want to put a real money, at least you should have 2-3 years of practice of seeing charts and understanding the data. Last year COVID आया, fundamentally strong share जितने थे, fundamentally strong, let's say the ITC, कुछ भी नहीं है, 496 years का है, उनका level से down हुआ 20%. And अगर मैं 15 मार्च से अनिल सिंह जी को सुन रहा हूँ, और 20 मार्च को इंडिया में लॉकडाउन लगना है, जितने टेक्निकल एनालिस्ट के बिट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट के शेयर थे, ड्रॉप बाय 75%. तो
So how the technical analysis can be analyzed? मेरा पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन is जितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, मान लो इतने वॉरेन बफेट और इतने दिया तो टाइटल उन्होंने लिया कि क्या सेड कि जो मेरा फंडामेंटल है वो फंडामेंटली अंडर वैल्यू है अकॉर्डिंग टू इंट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, तो अगर उन्होंने I'll first answer your first question. We'll go question wise because it will become easy. So what you're trying to say is कि your stocks fall. Yeah. ठीक है. किसी को भी पता है इंडिया में लॉकडाउन आने लगा और मार्केट एकदम क्रैश कर रहा है. हाँ. ठीक है, so every channel from 10th March to 20th March 2020 में अगर आप देखोगे every technical analysis was saying अगर कोई 5 पैनल टेक्निकल का बनता है तो फंडामेंटल्स को आपको बताइए. तो आप बोलना चाह रहे हो कि टीवी में जो टेक्निकल एनालिस्ट आए थे वो बोल रहे हैं स्टॉक ऊपर जाएगा. स्टॉक ऊपर जाएगा. ठीक है. So see, we are not here studying that टीवी में जो टेक्निकल एनालिस्ट आ रहे वो कितना सही बोलते हैं या गलत बोलते. That is not the topic for the day. They may have their own views on the market and they can be wrong. What we are trying to study is exactly is technical analysis a science which we should study? So that is the question for the today. See, when even I come on the TV, when we come on the TV, there is a different way we have to approach the whole stuff. You know, we have to tell stocks which are mostly in momentum. I cannot say कि ITC ले लो और 5 साल बाद ये डबल हो जाएगा. They'll not invite me. So I cannot say कि TCS ले लो, it is amazing stock. So I have to stop. Most of us, the tech TV people, have to say things which are already in the momentum. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 15 मार्च को कोई इन्वेस्टर 5 लाख रुपए लेके टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल के ऊपर मार्केट में एंटर होता है, 6 months उसका 75% या 65% कैपिटल नहीं. अभी मेरे को नहीं पता 15 मार्च को कौन सा एनालिस्ट क्या बोल रहा था. हाँ, बट मेरे ख्याल से इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गिर रहा था मार्केट में, उन लोग काफी सेल भी दे रहे होंगे. नहीं, मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल एनालिस्ट सेल रिकमेंडेशन ज्यादा दे रहे होंगे उस समय. हाँ, 15 मार्च को अगर बाय पोजीशन पे थे तो 20 अप्रैल को वही लोग कहते हैं सेल पोजीशन बना लो. हाँ, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस इज नेवर कंसर्न अबाउट योर व्हाई. सो देयर विल बी, आज ये डेटा है, आज के हिसाब से ये पॉइंट है, that is valid for another 3 to 5 years, 5 days. So they don't say for another 5 years. It is usually the quick money. So see what happens is most of the people who are watching TV, they watch कि आज देखो कल कौन सा बढ़ जाए. So that is how the shows are somehow short term trades के हिसाब से most of the people come and say. So they are very good analysts who come and say predict for 5 years also. Okay. So what we are trying to discuss today is technical analysis even a study, or is it even worth even we should consider it as a study? So that is the point of discussion today. Okay. What some TV personality have said, I cannot comment on that. He might have had his views. So that is a different thing. एक बात और है सर, जो कोविड आया, that is the exceptional things that can happen at any time. Yes. वार लग सकती है, उसका मार्केट टेक्निकल एनालिसिस से कोई रिफ्लेक्शन नहीं, उसका है रिफ्लेक्शन, क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट को सिर्फ प्राइस पता है, उसको ये भी नहीं पता कि कोविड आया कि नहीं आया. ही इज ओनली एंड ओनली कंसर्न विद द प्राइस. सो अगर वो प्राइस एक मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है तो उसके लिए वो सेल जोन बन गया है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता वेदर इट्स अ कोविड और इट्स अ नॉन कोविड या मैनेजमेंट चोर है या व्हाटएवर बी द रीजन. It's on certain assumptions. Yeah, so they'll be changed. Yeah. Yes. So जो टेक्निकल एनालिसिस जो डेरिवेटिव डाटा है ना, वो दिन बोल रहे हैं 1 घंटे बाद चेंज हो जाता है. assumption change होगी, कॉल्स की नंबर ऑफ कॉल्स जो है, अगर वो ज्यादा राइट हुई है तो अगले मूवमेंट में वो फिर परचेज भी कर लेते हैं. हाँ. सो आपको डाटा भी वो देखना ना, जो आधे घंटे बाद चेंज हो जाता है. It's usually whoever coming on the TV is usually a short term period, but you can use technical analysis for longer time frame also. For 5 years, 10 years, if you have the data, you can use a monthly chart to say if you want to hold a stock for 2 years or 3 years, you can use monthly charts. It is best for trading. It is best for trading, or it is best for, I'll say, time. See, you have to fundamentally select your stocks. Whenever you have to build a portfolio, you have to fundamentally select the stocks and technically do the entry and exits. So, because why fundamental doesn't work? Because fundamental is a very old way of, or very slow way of analysis. Quarterly numbers आएंगे, उसके बाद you'll get to know whether the company has done good or bad.
only after the month end, you'll get to know auto sales were good or bad. So it's always a past, something like what I'll say, a post-mortem analysis. Things have happened and then you are reading that. So there's always a time lag between the event. तब तक प्राइस काफी गिर चुका होगा. अडानी की न्यूज आई उससे पहले काफी प्राइस गिर चुका था. Okay, so technical analysis helps you to that. Okay, coming back, I mean, onto the similarities. Can we say a good economist is somebody जिसको सिर्फ economics के बारे में पता है, but उसको geography के बारे में zero knowledge है, history के बारे में zero knowledge है, he doesn't know anything about accounts. So can he become a good economist? Can we say एक economist है जिसको history में zero पता है, उसको ये भी नहीं पता शिवाजी महाराज कौन थे, he doesn't know geographically कि कौन से state में कौन सा crop होता है, he doesn't know accounts, he doesn't know maths. Can he become a good economist? No. So similarly, even to become a good technical analyst, you should have multiple discipline knowledge. You should be good with your basic accounts or basic balance sheet or fundamental analysis. You should be good in understanding the option data. You should be good in understanding the basic economy of the country. So in order to become a good technical analyst, you need to have that many qualities. Okay. Another concept of economics is behavioral finance. What is behavioral finance? It's relatively a new concept, hardly 25-year-old. Robert Shiller is one of the pioneer in this field. He's a Nobel Prize winner, Robert Shiller. So he has, put many concepts on this segment. What is on behavioral economics? So that is a key component now in economics also, and that is a key component in technical analysis also. To give you a short summary कि behavioral finance होता क्या है, तो behavioral finance का एक bottom line assumption ये है कि when it comes to finance, people are not as smart as they think. और मैं उल्टे तरीके से बोलूंगा, when it comes to money, people are dumb. When it comes to पैसे की जब बात आती है ना, तो लोग उतने स्मार्ट नहीं होते जितना वो दिखाते हैं या समझते हो अपने आप को स्मार्ट है, या people are dumb. When I'm making a bold statement like this, how do I prove that statement? It's a bold statement. It's a bold statement made by behavioral economist also. So just to give you a summary, जब 2020 में COVID था, market गिर रहा था, we have seen the highest redemption in mutual funds. We have seen the highest sell-off. Good companies like Nestle, who have 97% market share in baby food industry. Nestle का एक product है Maggi, which was sold out first in all the grocery store. Grocery store में सबसे पहले Maggi खत्म हुआ था. Company with such a strong fundamentals, that was also falling. People were not ready to buy. Now market at 16,000, we are seeing the highest number of accounts getting opened. New people are coming, new money is coming. So that is behavioral finance. People are not smart as they think. अभी नया market all time high है, people are okay to invest. जब market गिरा हुआ था, people were very scared कि अरे कल तो नेस्ले बंद हो जानी है, बजाज बंद हो रहा है, हीरो होंडा खत्म हो गया है, there will be nothing left. This is the greed and fear. क्या होता है जब भी मार्केट बढ़ती है तब नए अब क्या That is नए लोग पैसा गवाने वाले नहीं आएंगे, ये गवाएंगे. So जो पिछले आएंगे वो नहीं आएंगे, जो गवा चुके हैं वो नहीं आएंगे, अब नए आएंगे. So that is part of the फूल्स फैलेसी बोलते हैं उसको हम, इकोनॉमिक्स में उसको फूल्स फैलेसी बोलते हैं. तो वो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में भी है और टेक्निकल एनालिसिस में भी है. टेक्निकल एनालिसिस में भी जब हम डेटा पढ़ रहे हैं तो वी ट्राई टू सी वेयर इज द ग्रीड एंड वेयर इज द फियर. ओके, तो मेरा एक अभी ये बोलना था कि इकोनॉमिस्ट इज कंसिडर्ड एज द डेजिग्नेटेड प्रोफेशन. लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, हार्वर्ड में यू कैन गो एंड डू अ मेजर इन इकोनॉमिक्स, ऑल द आईवी लीग कॉलेजेस, बीट हार्वर्ड, कार्नेल, शिकागो, सारे ये जितने ऑक्सफोर्ड, ये सब इकोनॉमिक्स में मेजर देते हैं. हर कंट्री में देयर इज एन इकोनॉमिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट आर कंसिडर्ड एज लाइक अ सुपर पावर. We had a prime minister who was an economist. Okay, and every banks will find an economist. But technical analysis is considered as some tota wala science. People question it. People try to say कि when, see, it is also a science. It is also similar to what
technical economics, technical analysis is very similar to economics. It is a subject matter कि आप उसमें practice कितना कर रहे हो. So if you want to do some serious investment, you have to understand along with the fundamental, the technical analysis part also. Okay. Last week I had before the Army call, so जितना the Army deal किया था कि she doesn't need the stop बाद में Army का block हुआ था. She created the markets are not similar rosier than they are appearing. Same में उसके बाद 2 दिन बाद RBI गवर्नर का आया कि at this level, इस स्तर का हम लोग level cross कर रहे थे. RBI गवर्नर ने ट्वीट किया कि economy is so much gloomy, economy is so much gloomy that it's basis aspect. तो और फंडामेंटली ग्राउंड रियलिटी में हम सब सीए तो हमें भी पता है कि ये ऐसा सेल्स ड्रॉप है इसका मान लीजिए क्या is it a indication of another scam reputation of many? No, I cannot comment on what RBI has meant. I cannot, but I cannot say what he meant by that tweet. I mean, I cannot interpret his tweet. Being a technical analyst, there's no way I can understand that tweet. See, technical analysis में tweet analysis आता ही नहीं है. अगर fall आ गया तो I'll be selling in the market. ठीक है. अभी since the prices are above on a daily chart, since the prices are above 20-day moving average, I'll be buying that. I'll be looking for divergence. I'll not be concerned on the tweet. Obviously, as a technical analyst. So see, we'll stick to the topic of the day. So as a technical analyst, I'll not get into that. We can come again. You can come on to my Twitter handle. We can discuss on the tweets. Okay. See, okay. So अभी हमने एक point we try to drive that technical analysis और economics में similarity है. ठीक है. And economics is considered as a designated profession. So technical analysis को भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए. Okay. So this is the point we try to drove अभी तक. हाँ. किस पैरामीटर्स पे इनकी बैलेंस शीट को स्टडी करना है बिकॉज़ इफ वी लुक एट द पी ऑफ टू कोड्स एप्पल एंड हैप्पीएस्ट माइंड इनका पी रेशियो होता है कि आपको शेयर रखने की और जो इनकी प्राइस की मूवमेंट्स है कि आपको बेचना अलाउ नहीं कर रही एग्री या अभी जो न्यू एज आईपीओस हैं इनको किस पैरामीटर्स पे इनकी कंपनी को इनकी बैलेंस शीट को स्टडी करें और ये मेरे सारे जो कोलीग्स मेरी एज के हम सबका एक कॉमन क्वेश्चन. हाँ, सी आप न्यू एज आईपीओ जो आ रहे हैं उसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस तो आपके पास डेटा ही नहीं है. ठीक है. यू कैन ओनली स्टडी बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स एंड फंडामेंटल्स में भी सी दीज आर न्यू एज बिजनेसेस. व्हाट वी हैव सीन प्रॉब्ली 1990 में जो निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट था, टुडे इट इज वेरी डिफरेंट. मेटल, हेवी इंजीनियरिंग वाज वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ निफ्टी. टुडे 40% इज बैंकिंग, अनदर 25-30% इज IT. Okay, so 60 to 70% constituent ये है. 20 साल बाद you will find maybe some of the PSU bank not even there in the business also. Forget about Nifty, कुछ PSU bank business में भी नहीं रहेंगी, बंद हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि भाई जिस हिसाब से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ब्लॉकचेन आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये इनके सरकारी काम बंद ही हो जाएंगे. तो हो सकता है Zomato would be part of the Nifty 50. So you have to understand that ways. See, the best is how इन कंपनियों में पैसा कौन लगा रहा है? पी फंड्स. तो आपको भी पी फंड के जैसे समझना पड़ेगा. पी फंड क्या करते हैं? छोटा छोटा पैसा सब में डाल देते एंड एक स्टॉक को बढ़ने देते. जो बढ़ गया जैकपॉट लग गया, बाकी सब उनको भी पता है. इट्स लाइक एन ऑप्शन. इफ यू सी हाउ अ पी फंड इज इन्वेस्टिंग, दे इन्वेस्ट इन से 100 स्टार्टअप्स. उसमें से उनको भी पता है कि 90 फेल होते हैं, सिर्फ 10 ही चलते हैं, जो कि 10 में से भी 4 ही आईपीओ लेवल पे जाएंगे. तो आपको भी वही करना है. यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑन दैट. नॉट टू मी, बट अभी मार्केट है तो आपको सलाम तो करना ही पड़ेगा. I mean, not to me. I don't find. See, I am a F&O trader. मैं मेरा अगर बताऊं तो मैं काफी बहुत ज्यादा F&O करता हूँ. तो when I do, मेरा ज्यादा जो स्पेकुलेशन है ना, जो स्पेकुलेशन की वो क्रेविंग रहती है, वो उधर खत्म हो जाती है. So when it comes to stock, I go very conservative. I go 70 to 80% on the large caps. So मेरे को निफ्टी 50 के भी बियॉन्ड रिस्क लगता है. So forget about the IPOs. T2T में शेयर इसलिए ट्रांसफर हो रहे हैं कि एक तो उसमें वॉल्यूम्स कम है या बिकॉज ऑफ सम फंडामेंटल रीजंस या वोलेटिलिटी के ज्यादा. So avoid those T2T shares. On this forum, I would say
at this market valuation, avoid small caps, stay invested in large caps. They are the best companies, and they are the, they have created fortune in the past, and they'll keep on creating fortune in the future also. So there's no question to that. When we say fortune, 16-17% CAGR is good enough to create fortune. You don't need every multi-bagger, 100x multi-baggers. Okay. Now, it's not covered. Yeah. We'll have a question answers round after the session. I cannot give tip. We have just applied for our SEBI license of a corporate investment advisor. So I just want to refrain that. I usually give tips on tweets, so you can follow me there. Okay. So अभी तक हमने ये point drive किया कि technical analysis काफी एक अच्छी study है. We should do that. Okay. It is not a holy grail, but it is something which is very important. You cannot avoid it. हाँ जी. सी आपको पता आईटीसी साइडवेज मूवमेंट में है, आपको ये पता साइडवेज मूवमेंट में है ना, तो आप साइडवेज मूवमेंट वाली स्ट्रेटजी यूज करो ना, आप साइडवेज वाली स्ट्रेटजी यूज करो ना, ठीक है. थोड़ा सा शेडी आई है, क्यों आया है वो सारा गिवन है, क्यों वो नीचे है, जब तक वो जो कंसर्न है वो रिमूव नहीं ना होते, कोई इसको हाथ नहीं लगाया. वो ये कह रहा है पैसा यहाँ से शिफ्ट. मैं I'll jump to that. Okay. So अभी तक हमारा डिस्कशन क्या हुआ? टेक्निकल एनालिसिस इज समथिंग सिमिलर टू इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स बहुत एक प्रोफेशन है, तो ठीक है. टेक्निकल एनालिसिस इज आल्सो समथिंग वेरी नोबल. सो अभी आपका क्वेश्चन रहेगा, सर टेक्निक ठीक है, यू बॉट माय पॉइंट कि टेक्निकल एनालिसिस इज समथिंग गुड. सो व्हाई, योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाई टेक्निकल एनालिस्ट इज नॉट मेकिंग मनी, या हर टेक्निकल एनालिस्ट पैसा बना रहा है क्या? ठीक है. तो आपके सबका क्वेश्चन ये रहेगा नेक्स्ट, is every technical analyst making money, and if technical analysis is so good, why everybody is not making money? So I'll give two of my personal experience of 13 years where most of the technical analysis fail. One is practice. Most of the people don't come with enough practice. They have only 2-3 years of practice, and they start betting big amount of the money. Okay. And second thing is, market is usually in two phases. Okay, market is actually always in two phases. What are the two phases? It can be trending or it can be sideways. Okay, it's like a law of gravity. Debate नहीं है इसमें. Market दो phase में होता है, एक trending phase होगा, एक sideways phase होगा. How much of the time market is in a trending phase? कितने time market trending phase में रहता है? Usually say less than 30%. On a higher side में conservatively पकड़ लिया up to 30%, but it is less than 30% of the time market is in a trending phase, and 70% of the time market is in a sideways. Okay. Then we say sideways. So what do we mean by trend and sideways? So trend can be again subdivided into two parts, uptrend and downtrend. So what is uptrend? Continuous movement of stock going up is known as uptrend. Continuous movement of stock going down is known as the downtrend. Sideways is whether stock is neither going up or neither going down. So technical analysis के हिसाब से हम कैसे uptrend को define करते हैं? Whenever a stock is making higher high, ये वाला high इसके पुराने high से ऊपर था, and whenever it's making a higher low, मतलब अभी इसका relevant low जो है वो पुराने low से ऊपर था. So that is known as a uptrend. And downtrend, whenever stock is making lower low and a lower high, मतलब उसका जो recent low है वो पुराने वाले low से ज्यादा नीचे है, और जो high था वो पुराने वाले high से ज्यादा नीचे है. And what is known as sideways? When market is neither making a new high or a new low. ठीक है. This is something similar to your ITC chart. अभी problem क्या होता है? People use one indicator or whatever, they study one part and they try to use it across all the stocks. निफ्टी के 5000 स्टॉक है ना, वो एक ही कलर से पेंट, एक कलर सीख लिया उन्होंने, ब्लैक कलर मिल गया उनको, वो सब सारे स्टॉक्स को एक ही कलर से पेंट कर रहे हैं. दैट इज द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिस्ट. सी देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स अवेलेबल फॉर बोथ द फेज. टू गिव यू एन एग्जांपल, से इफ यू आर आर्मी हेड, okay, and you have three type of army. What are the three type of army? Your air, naval and a land army. And if you have a fight in Kargil, can
even if you have the best submarines, can you win? Best warheads, best ships, can you win? And if you have a war in say Indian Ocean, you deploy the best tanks, can you win? No. Okay. So see, market is also similar to that. If you have a war in sideways market, why do you want to deploy a trending market tool? See, technical analysis में दोनों type के market के लिए tools available है. There are hundreds of indicators for trend following stock, and there are hundreds of indicators which is in a sideways or a mean reversion. Okay, so you have to know first and foremost. आपको ये technical analysis करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि market कौन से phase में है, whether it's in a sideways or whether it's in a trending. Coming back to the ITC का point, अभी ITC सबको पता है sideways चल रहा है, बट कितने जने जो 217 पे या 220 पे हिम्मत करते शॉर्ट करने का ITC को? 220 आएगा तो खरीदने की कोशिश करेंगे ITC में, and then they complain कि ITC is not working. Somebody is making money obviously in ITC. जो 227 पे जब भी ITC आ रहा है शॉर्ट कर रहा है. We don't learn that tool and we try to complain. आप फंडामेंटल को एक बार निकालो ना बाहर. आप when you understood the market is in a sideways, why are you using a trend following indicator? See, if you are so fundamentally bullish, why you are not buying at 170? That's what I mean. So the thing is, you have to understand which phase the market is, and you have to use the tools and indicators accordingly. It can go to upward trend. So that is why you have a stop loss. See, whenever the trend changes, it will give you pre-indication. Trend change के भी indications रहते हैं. Say the first thing is the momentum is going to change. आपका जो breakout है, उसमें बहुत strength आएगा. See, in a sideways market, ये sideways market है. अब इसका trend जब change होगा, जब ये higher highs मार रहा होगा ना यहाँ पर, तो इसका momentum बहुत strong रहेगा, इसका volume बहुत तेज रहेगा, इसके RSIs बहुत नीचे रहेंगे. So that is one of the way we can say कि ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है. और अगर ये यहाँ पर आ रहा है एंड उसके RSI या MACD बहुत डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं आपको, या वॉल्यूम नहीं है इस ब्रेकआउट में, then you can say there is a sideways market, and you have to use the tools accordingly. You cannot use one tool in all the market. अपर ट्रेंड में आपको टारगेट सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो बेस्ट इज यू हैव सर्टेन फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से आप टारगेट्स निकाल सकते हो. जब एक स्टॉक अपर ट्रेंड में है या ब्लू स्काई टेरिटरी में जा रहा है, नए हाइस बना रहा है, तो आप उसके टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे तो नहीं निकाल सकते. आप फिबोनाची लेवल्स है या उस बाकी कुछ टूल्स है उसके हिसाब से निकाल सकते हो. और बेस्ट है आप ट्रेल करो अपना स्टॉप लॉस. जब आपका स्टॉक आपको पता है कि बहुत स्ट्रांगली अप जा रहा है, तो आपको क्या हायर हाई पे निकालना है? इट्स एन अ गुड ब्रेकआउट ना, इट्स अ गुड ब्रेकआउट, तो आप स्टे इन दैट. सी गिव यू एग्जांपल ऑफ JSW steel sectors, all the steel sector rallied. Give you example of JSW 200 से 700 की रैली की, हर समय नया हाई बना रहा था. जब आपको पता है उस स्टॉक में इतनी गर्मी है, it is going to a new highs, why you have to cut it? Trail your stop loss. So what are the components of technical analysis? There are patterns. Charts में patterns बनते हैं, so that we can study. There are indicators, there are oscillators, and price action and time frame. So ये जो पांचों चीजें हैं, मोस्टली ये पांचों चीजें रहती है, एंड ये पांचों चीजें आपकी साइडवेज मार्केट के लिए अलग है एंड ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट के लिए अलग है. इफ यू यूज एक ही ये पांचों चीजें साइडवेज में भी और ट्रेंड में भी, देन यू आर बाउंड टू मेक लॉसेस. बट इफ यू कैन, अगर आपको उतना डिस्टिंग्विश करना आ गया कि वो आपको ऑसिलेटर कब यूज करना है, whether it's the stock is in a sideways or it's in a trend, then I'm sure you'll be able to make good money out of technical analysis. Members, if you have any questions related to the market, related to the stocks, you can just ask. We will be having the 15 minutes question answer session. Multi-baggers cannot be analyzed by technical analysis. Multi-baggers can be analyzed by only by doing a fundamental analysis. Technical analysis cannot predict the multi-bagger. Multi-bagger definition is stock moving 5x or 10x.
आप 100 का स्टॉक लिया और 500 या 700 में बेच रहे हो एटलीस्ट. सो 5x एंड 7x कैन नॉट बी ट्रेडेड थ्रू टेक्निकल एनालिसिस. बट टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बता सकता है कि स्टॉक 100 का है, 140 जाएगा कि नहीं जाएगा, वहां तक आपको गाइड कर सकता है. It cannot be used for a very long term, but it can be used. It works very well on a short term duration. Short term means couple of months to couple of years maximum. But long term is generally technical analysis उतना अच्छा काम नहीं करता. So it depends on your style, on your temperament, on your personality traits. So if you are whether you are a Sevak or a Dravid, that is you have to guess, and then you can choose your game accordingly. I use a lot of EDX. I use a lot of RSI and MECD as a momentum indicator. Crossovers and divergence. So, I trade a lot of F&O. So that is the most riskiest part. I sell options. So उससे ज़्यादा risky शायद कुछ है नहीं, at least Indian stock market में. हाँ, so open interest is the holy grail. मतलब open interest तो सभी track करते ही है. I don't do crypto. मेरे को crypto का कुछ idea नहीं. You can obviously that's just the numbers. You can apply this. So आपको वो पता है कि आपको पता है कि उतना volatile है, तो आपको उसकी volatility के हिसाब से you have to use the indicators. First is the management. For long-term investment, you first and foremost you're not buying the share, you're buying the company. Okay, so first and foremost is the management. Second is how is the product doing? I mean, how is their product doing? So before we jump into the actual balance sheet numbers, you have to do mostly before you do the quantitative analysis, you have to do a qualitative analysis. Qualitative analysis is far more important than the quantitative. Before jumping into the PE, you should see who's the management, what is their product doing, what is the scope of their product growth. So these are the first three key factors for quantitative data. Qualitative data, numerical numbers, I use PEG ratio a lot. That is P ratio and the growth. Market usually give higher multiples to the growth companies and lower multiple to the non-growing companies. So आप देखो कि जो भी company is growing, उसके PE बहुत ज़्यादा रहेंगे. So अगर आप सिर्फ PE के हिसाब से analyze करोगे, so it can misguide you. But if you use the growth factor also, it will give you a better clear picture and it can give you a better analysis कि भाई future में कौन सी company ज़्यादा grow करेगी. CAGR नहीं, CAGR is compounded annual growth rate of the past years. I'm saying the PEG ratio. PEG ratio and the DuPont ratio are the two ratios which was there in fact in our CA syllabus also, but they just touched it as बहुत ऊपर level पे, but it was there as the part of the syllabus. Quantitative analysis use a lot of mathematical and statistical tools, and they use high-end computers. So it's a pure maths, it's pure algorithmic thing. Here, technical analysis is pure pattern. It's a combination of art and science. Yeah. So like your Google map is pure quantitative side. When you say a chart and you're seeing the pattern, it's a technical analysis. So it's a combination of both. It was part of the job. I mean, it was part of the job. सीखना ही है, काम करना तो सीखना ही पड़ेगा. मतलब I started with macro, Excel सीखा, Excel में macro सीखा, macro के बाद VBA सीखा, VBA के बाद C++ में बहुत दिन दिमाग लगाया, नहीं सीख पाया. Then somebody told me Python is far better. So 2016 में, around 15 में, I started with Python. YouTube में बहुत सारे videos थे. I mean, forget about me. US में तो school बच्चे Python सीख कर they have made the app. So there's no limitation. See, आप चार्ट पढ़ना स्टार्ट करो, that you'll get the growth and पैसे आएंगे तो अपने आप रिस्पेक्ट भी आ जाएगी.
So when you start making money, your people will start recognizing your efforts. So whether or even if they don't give you recognition, who cares? As long bank में पैसे हैं. So bot trading. Bot trading is nothing but your quantitative trading. When you bot is मतलब आप पूरा mathematical formula बना दिया और वो system trade कर रहा है. So that is bot trading. So आपने डाल दिया moving average का crossover हो जाए, खरीद लो, crossover हो नीचे हो गया, बेच दो. Any sort of that sort of formula is known as bot trading. Next year outlook, Technicals Nifty baseline is very strong. I see Nifty going 1 lakh in my lifetime. In my lifetime at least. I don't know. मतलब मेरी lifetime थोड़ी बड़ी है. But 1 लाख तो Nifty देखूंगा. 1 लाख तो Nifty देखूंगा. See what we have. I have seen Nifty 1000 and Nifty at 16,000. So 1000 से 16,000 की जर्नी देख ली तो 16,000 से 1 लाख तो जाना ही है. There's no second thought about it. See आप मार्केट को जो देख रहे हो ना, मार्केट नहीं निफ्टी 50 कंपनीज का मार्केट इंडिकेटर बना हुआ है निफ्टी. ठीक है, अगर आप निफ्टी 50 कंपनीज देखोगे सो वो उनको उस जीडीपी से इंपैक्ट नहीं हो रहा जो जीडीपी आप और मैं फेस कर रहा हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट एसएमई जीडीपी व्हिच इज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस, बट टीसीएस इज नॉट गोइंग थ्रू अ क्राइसिस. बजाज इज नॉट गोइंग थ्रू अ क्राइसिस बिकॉज उनका इंडिया का सेल खत्म हुआ तो दे हैव इंक्रीज्ड देयर एक्सपोर्ट्स. सो देयर एक्सपोर्ट वाज इंक्रीज्ड बाय almost 17% over the past years. So that they have done. So these companies are not getting impacted as much as you and me are getting impacted. So aapko aur meko, we can feel the heat, but TCS is not feeling the heat. That's why the stock is not going down. Secondly, the key factor which has changed is the liquidity and the new people who are coming to the market. So new money is coming. So that's why market is not correcting and not going to correct anytime soon. तो सर मैंने कल का आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया होगा. टेक्निकल एनालिसिस चलता है कि नहीं चलता शायद. सर 2019 तक हम एक फॉर्मूला यूज करते थे वॉरेन बफे का, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन टू द जीडीपी. हाँ, तो वो जब भी 120% क्रॉस करता था इंडिया और अमेरिका में मार्केट फॉल होती थी. हाँ, यानी इंडिया का 95, उनका 120. हाँ, अब यूएस का 200 है. हाँ, इंडिया का 105 है. हाँ, तो क्या हम वापस आ रहे हैं कि यार 200 के पास पहुंच रहे हैं? नहीं 200 के पास नहीं पहुंच रहे. वो जो फॉर्मूला था वो पुराने डेटा के हिसाब से बना हुआ था. पुराने डेटा में हमने इतना क्वांटिटेटिव ईजिंग कभी देखा नहीं पहले. 2 साल का ही है अभी, बस से प्री कोविड तक वो एप्लीकेबल. प्री कोविड भी, पोस्ट कोविड क्या हुआ, हर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारा रुपए प्रिंट किया. अगर आप निर्मला सीतारमन जी की लास्ट स्पीच देखोगे बजट वाले दिन की, शी सेड वी आर गोना, मतलब इंडिया में इतना अग्रेसिव स्पीच कभी किसी एफएम ने नहीं दिया था शायद. यू आर द सीएस, यू आर द बेस्ट जज ऑफ द फंडामेंटल पार्ट. वी ऑलवेज हैड, हमेशा एक डर के स्पीच रहता था एफएम का कि हमारा डेफिसिट कितना रहेगा जीडीपी टू लोन. नो, दिस टाइम शी डिडंट केयर. मतलब देयर वाज अ स्पीच वाज वेरी क्लियर कि हम ग्रो कर रहे, हम पैसा रेज करने वाले, वी विल गोना बोरो मनी, वी डोंट केयर आवर डेफिसिट. एंड दैट्स व्हाट दैट इज व्हाट मार्केट लाइक्ड. अगर आप देखोगे 14,250 से मार्केट 15,000 टच किया था इमीडिएटली आफ्टर बजट. फरवरी का आप डेटा देखो, बजट के बाद मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली की. Why? Because of the body tone. I mean, फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ था, बट जो एटीट्यूड है ना वो चेंज हो गया था कि हम वी आर गोइंग फुल थ्रॉटल. हम मतलब 5th गियर में गाड़ी चलाने वाले हैं, हमको अब ग्रोथ चाहिए. वी डोंट केयर व्हाट S&P says or what CRISIL says or what any of these rating agencies speak about us. No, whether they give us -A rating or junk bond status, we don't care. So that was the tone, undertone. What big FPIs या फंडामेंट जो फॉरेन पोर्टफोलियोज है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनको वो अच्छा लगा कि अरे इंडिया इज टॉकिंग अबाउट ग्रोथ. So that is what the economist and the FM has to think. हाँ, नहीं बट उस समय और अभी में बहुत सारा डेटा पॉइंट भी चेंज हो गया है. अब उस समय इतना डेरिवेटिव नहीं था, उस समय इतने 25 साल वाले लड़के मार्केट में थे भी नहीं. इंडिया वाज इम्यून.
बट अब आप देख रहे हो बहुत नया चीजें चेंज हो रहा है। हाँ, अभी 10 साल 5 साल पहले तक मतलब पीपल लाइक मी हुज कंसिडर्ड एज अ ओल्ड स्कूल या मतलब बहुत बुढ़े माने जाते क्रिप्टो के करेंसी में। मतलब आई हैव नॉट ट्रेडेड क्रिप्टो, जबकि मैं बिटकॉइन को काफी 2008 से देखते आ रहा हूँ। तो क्या Any more questions? So the last part, give us any tips of shares or sectors to go for in You can say sector, not a for what I am see I am overly bullish on auto sector and banking sector. Fundamentally, I can say why, because auto contributes 50% of our Indian manufacturing GDP. इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द इंडियन ऑटो सेक्टर, एंड दिस सेक्टर इज डायरेक्टली अलाइंड टू आवर जीडीपी. मतलब जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा, ऑटो सेक्टर विल बी द डायरेक्ट बेनिफिशियरी. रियल एस्टेट में भी होता है, बट रियल एस्टेट में यू हैव कंप्लायंस प्रॉब्लम, गवर्नेंस नहीं मिलती, अच्छी गवर्नेंस की कमी नहीं है. 4 ही लिस्टेड स्पेस में कंपनीज है, F&O साइड में DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट 3 ही कंपनी है. तो इट बिकम्स द आप सेक्टोरियल उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते. ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छे मैनेजमेंट्स है, बहुत अच्छी कंपनीज है, एंड आज के डेट में मतलब अगर मैं आप मेरे को ये 4 महीना पहले पूछते तो शायद मैं इतना ऑटो में बुलिश नहीं होता. आज हूं क्योंकि ऑटो सेक्टर अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है. देयर आर प्रॉब्लम्स इन द ऑटो सेक्टर, बट दैट दीज प्रॉब्लम्स विल नॉट गोना स्टे फॉर एवर. ये प्रॉब्लम्स हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाली. मैं पुणे से आज ट्रैवल करके यहाँ आया हूँ, you are here, so we'll be back to normal. The new normal will not be normal, we'll get back to pre-COVID levels. So auto sector will gonna boom. Stocks, auto sectors की काफी अच्छी stocks, अच्छे strong management companies are there, available at very good pricing. That is one. Second is private sector banking. Private sector banking will gonna see a transformational change. जितना GDP rise होगा, इनको भी direct beneficiary है. So these बैंक्स, अभी भी कुछ बैंक्स है जो कि इंडिया की टॉप 3 बैंक्स, टॉप 5 बैंक्स में से दे आर अवेलेबल एट उनके हाई से 30% नीचे. ठीक है, इंडिया की टॉप 3rd बैंक जो है मर्जर के बाद जो टॉप 3rd बन गई, वो अभी भी 30% नीचे है. 2000 का स्टॉक 2100 का, 2000 का स्टॉक 1700 पे है. सो दो सेक्टर्स आर वेरी गुड. नई कंपनी बना ली है रिलायंस एनर्जी में, और वो पावर स्टॉक की अगर जो टेस्ला में इनकॉर्पोरेट हो इंडिया के अंदर, बैंगलोर में, ये जनवरी के अंदर, कैन वी सी द नेक्स्ट डिकेड लॉन्च टू द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? नहीं, बिकॉज अगर आप इंडियन एनर्जी सेक्टर देखो, so we are installed capacity is close to 3 lakh megawatts, and what we are using is only 180, so there's still underutilization. से आप इंस्टॉल तो कर दोगे, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं अंडर है, आपकी ग्रिड लाइंस ही नहीं फैली हुई है. से आप एनर्जी प्लांट बना दो, लेकिन मतलब खरीदेगा कौन, आप बेचोगे कैसे उसको? सो द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर. सो अनाउंसमेंट आया ना सर, अनाउंसमेंट काफी आते हैं. मोदी, आप तो सीईओ, आपको तो ज्यादा पता है. मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के लिए इतना इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया था. आपके तो कितने क्लाइंट्स ने फोन किया होगा आपको कि क्या क्या टैक्स बच रहा है, बताओ मेरे को. स्टार्टअप सब आगे होंगे स्टार्टअप खोलने के लिए. आपने भी पॉलिसी पढ़ी होगी, मतलब उसमें से इनफैक्ट 1 साल बाद 1500 में से 3 कंपनियां सिलेक्ट हो पाई थी. तो वो अनाउंसमेंट पे मत जाओ सर. नहीं, मेरे को तो बहुत बुलिश लग रहा है, बट आई मीन आई एम वेरी बुलिश ऑन मार्केट, बट एटलीस्ट आई विल से आई हैव एग्जिटेड ऑल माय स्मॉल कैप्स. वो आरबीआई गवर्नर का अपना पर्सनल ओपिनियन था. ही मे चेंज हिज ओपिनियन, बट आई डोंट सी, एटलीस्ट उनके एक्शन से अभी कुछ नहीं लग रहा है ऐसा. एंड आई थिंक इंडिया इज इन अ वेरी टाइट स्पॉट. ऐसा कभी हुआ नहीं जब आपकी इन्फ्लेशन हाईएस्ट है, इंटरेस्ट रेट लोएस्ट है, एंड ग्रोथ लोएस्ट है. सो आरबीआई गवर्नर हैव नो वर्क राइट नाउ अदर देन ट्वीटिंग. वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं सकते क्योंकि रियल इकोनॉमी खत्म हो जाएगी. ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे. अगर आप कमोडिटी प्राइसेस देखिए, ग्लोबली भाग रहे हैं, तो आपके इंडिया में हाथ में कुछ है नहीं आप कंट्रोल करने के. तो आप स्टील, ग्लासेस, एवरी एल्यूमिनियम, ऑल द बेस मेटल हैव गॉन अप. तो आप मतलब कंट्रोल करेंगे क्या? तो ट्वीट कर रहे हैं अभी. गोल्ड 1 लाख 2030 और 65,000 टेक्निकल ट्रेंड.
I don't see much of the commodities. तो मतलब I know commodities ऐसे fundamentally, but इतना commodities में ट्रेड नहीं करता. आएगा सर क्रूड का इफेक्ट, बट क्रूड का इफेक्ट इतने जल्दी नहीं आएगा. मतलब सी पीपल विल हैव टू ट्रैवल एंड कम्यूट, तो क्रूड इज का इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं आता है मेरे ख्याल से अपने पॉकेट्स में. मतलब ठीक है, क्रूड 90 का 100 आ गया, 10% बढ़ा, हमारा 16,000 का पेट्रोल बिल था 17,600 हो जाएगा. तो इट विल नॉट इम्पैक्ट इतना जितना मार्केट में फ्रंट लाइन न्यूज हो जाती है. तो अगर मेरे को चलानी है गाड़ी तो मैं चलाऊंगा. क्रूड 200 भी पहुंच गया तो भी मैं चलाऊंगा. मैं क्या करूंगा, क्लाइंट से ज्यादा चार्ज करूंगा या सैलरी एक आधी कम कर दूंगा स्टाफ की, बट गाड़ी तो चलाऊंगा. ईवी बहुत दूर है सर, बहुत दूर. मतलब आई डोंट सी ईवी डिसरप्टिंग द इंडस्ट्री सो सून. यूरोप में भी अभी तक नहीं हो पा रहा उतना डिसरप्शन. एंड अगर आएगा तो ईवी के कंपनीज रहेंगे. मतलब सी बजाज इज ऑलरेडी विद द ईवी, टाटा इज ऑलरेडी विद द ईवी. सो ईवी की कोई ओला डिसरप्ट नहीं कर पाएगा. ईवी को करने वाले तो यही कंपनीज है. तो एनी विच इज आई एम होल्डिंग बजाज, सो आई एम होल्डिंग ईवी प्ले आल्सो. मेजर कंपनीज ने आई डोंट लाइक टाटा मोटर्स. ईवी कंपनी से टारगेट कर लिया है. टाटा मेरे को आई मीन अगेन कमिंग बैक टू टाटा मोटर्स, मैं क्यों आई मीन आई शुड नॉट बी सेइंग ऑन द स्टॉक पर से, बट फंडामेंटली, टेक्निकली नहीं. अब टाटा मोटर्स देखो, उनके पास लैंड रोवर जैगवार है विच इज वे अबव देयर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. ओके, इट इज अ हाई एंड लग्जरी कार्स. तो आप देख लो टेस्ला के आने के बाद हाई एंड ऑटोमोटिव सेक्टर में हाई एंड लग्जरी कार्स को कोई वैल्यू नहीं देता है. जिस हिसाब से टेस्ला को पूजा जाता है, इट इज नॉट वैल्यूड दैट मच, दैट डियरली. थर्डली, वर्ल्ड में कहीं भी कुछ होता है तो टाटा मोटर्स पे इंपैक्ट हो जाता है. यूएस स्लो डाउन, टाटा मोटर्स पे इंपैक्ट. चाइना स्लो डाउन, टाटा पे इंपैक्ट. ब्रेक्सिट, टाटा मोटर्स स्लो